बच्चे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। वो कहते हैं द फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ देन क्रस्ट क्रस्ट। तो फिनोमिनल लाइक इंटरफेरेंस एग्जिस्ट बिटवीन वेव्स। डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट की वेवलेट्स डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए ओवरलैप कर रही थी। सेंट्रल मैक्सिमा, देन मैक्सिमा 1/3, 1/5, 1/7, 1/3, 1। तो फिनोमिनल इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है तो डायरेक्टली बोला कि लाइट की नेचर कैसी है, वेव नेचर एंड ट्रांसवर्स नेचर है। तो फिनोमिनल लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, polarization can be explained by considering that radiations possess wave nature. Radiations possess wave nature. But the phenomenon like photoelectric effect can be explained by considering that radiations possess particle nature. It means radiations sometime acts as a wave and sometime acts as a particle. That means radiations possess dual nature. Radiations possess dual nature, wave nature as well as particle nature. इसका मतलब रेडिएशंस की ड्यूल नेचर होती है, वेव नेचर होती है एज वेल एज पार्टिकल नेचर होती है।